Sir, let me know. Are we ready? Yes, we are ready. We are ready. Thank you. Thank you. Good evening, everyone. I am CA Agarwal, General Secretary of Voice of CA. I would like to welcome you all today. Thank you for joining us on a Wednesday evening. I am happy to share this day with you because जैसे Voice of CA में हम लोग कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं all the time. Today we are launching Voice of CA's Bullet webinar series, where time and again we will do 1 hour webinar sessions on very specific burning topics, especially for young practitioners. क्योंकि आजकल टाइम किसके पास है, 1 घंटा बहुत है. So this is the first webinar of this series. Learn the art of drafting with ChatGPT. This was the idea of our senior member CAA Srivastava sir, who is here with us today in the panelist section. Welcome you, sir. Today's speaker is ARPIT TANEJA. He specializes in internal audit and IFC and has worked with more than 10 industries. However, I have never met anyone with more hands-on experience of using AI in practice. I think he at least has 10 AI tools in his own office. In fact, he's a semi-finalist at ICAI AI Hackathon, which is also an AI series that ICAI is doing to promote. We welcome you, Arpit, and without wasting any time, over to you. Thank you so much, Neha. First and foremost, I would like to extend my heartfelt thanks to Sanjay Agrawal sir and whole Voice of CA team for providing me with the opportunity to present on the use of ChatGPT for drafting. I also want to express my gratitude to all the participants for taking the time out of from their busy schedule to attend the webinar. Your presence is greatly appreciated. Today, we will explore how to leverage ChatGPT for effective drafting. If you have any questions or queries during the presentation, please jot them down and we will address them at the end of the session. Yes, just to give the information, please put your question and answers in the Q&A box. And if you have some comments or you want to chat, you can put it in the chat box. Thank you. Okay. Is my screen visible to everyone? Yes, I can see. I can see it. Please go ahead. Okay, thank you. So I will be assuming that some of you may be encountering ChatGPT for the first time. Our presentation will cover several key topics, including a demonstration of how ChatGPT can be effectively utilized for drafting. To begin, let's delve into an introduction of ChatGPT. So ChatGPT is an advanced AI language model developed by OpenAI. It has been trained on an extensive range of texts from books, articles, websites, and other sources. It enables ChatGPT to understand and generate human-like text based on the input it receives. Some of you maybe remember जब बचपन में एक टेलीविजन शो आता था शकला का बूमो, जिसमें एक मैजिकल पेंसिल होती थी. उस मैजिकल पेंसिल से एक कैरेक्टर ड्रॉ हुआ था झुमरू, जो उसमें तब दिखाया गया था कि वो कोई भी बुक, कोई भी नोटबुक को अपने जैसे ही वो हेड से टच करता था, सारा कंटेंट उसके माइंड में होता था. उस टाइम ऐसे फील होता था कि कुछ ऐसा कुछ हमारे साथ हमें भी मिले. तो आई थिंक इट जस्ट टुक 2 decades और साइंस ने वो कर दिया. So we have ChatGPT and the other AIs with us so that they provide the readily available data and the answers for our questions. Coming to the importance of effective drafting. Point number 1, precision and clarity. In each field, clear communication is crucial for accuracy. Properly drafted documents reduce the risk of errors and misunderstanding. Professionalism. This is particularly important when communicating with clients, regulatory bodies, and stakeholders. Streamlining process. Effective drafting quickly help in saving the time, which can be redirected to the more critical tasks. Accurate reporting. Accurate reporting is necessary and
errors in documentation can lead to compliance issues and potential legal consequences. Client trust, as always, they are more likely to feel confident in our services when they receive well-drafted communications. Coming to the next point, guidelines for using ChatGPT. So we have few guidelines कि हमें ChatGPT को use कैसे करना है. Coming to the guideline 1, providing clear and detailed prompt. What do we mean by prompt? जो भी हम text input हम ChatGPT को दे रहे हैं, it known as prompt. The more specific your prompt, the better the output. I will show you at the time of the demonstration. For example, instead of asking ChatGPT, draft an email, we should be specific with the type of the email, its purpose, and the key points we want to include in that email. Guideline 2, reviewing and editing AI generated content. Always review the AI generated content for accuracy, relevance, and completeness. We need to check if all the necessary points are covered and if the information is correct. Edit the draft, align with our professional tone and the style. While ChatGPT can generate high quality of drafts, it may still require human touch for polishing and personalization. Verify any factual fact information or data included in the draft. Ensure that all the details are accurate and up to date. Coming to guideline 3, ensuring compliance with legal and professional standards. We need to ensure that all the drafted documents comply with the relevant laws and regulation. We need to double check the legal language, clauses, and the terms used in the contracts and the agreements. We need to maintain the ethical and the professional standard expected in our field. We need to make sure that the content aligns with the guidelines and the practices of our profession. Along with the benefits, we have few challenges as well, which we may encounter while using the ChatGPT. So there are few challenges. First is data privacy and confidentiality. It's crucial to avoid inputting sensitive or confidential client information. So for example, जैसे आज Google है, Google पे हम लोग बहुत डिपेंडेंट है. Google की डिपेंडेंसी ऐसी है, if we search anything on Google और मे बी हम किसी प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, we start seeing those kind of ads only. Now, if we'll talk about the AI is more powerful than the Google in my opinion. So if Google can do these kind of things, I'm not sure what kind of things AI can do. So we need to make sure that the data privacy and the confidentiality of the documents and the content. Also, we need to develop and enforce internal policies regarding the use of AI tools to ensure that all staff understand and adhere to the data privacy best practices. Over-reliance on AI. So while ChatGPT can be powerful assistant, it should not replace the human judgment. Always review and critically assess AI generated content before using it in a professional context. AI limitations. Yes, we have few limitations as well. ChatGPT, while advanced, has some limitation. It may not always understand the request of the user or produce contextually actual result. And we need to regular update the ChatGPT by providing the feedbacks to the ChatGPT support. Bias in AI outputs. So AI models can inevitably produce biased results based on the content it receiving. So we need to be vigilant in identifying and correcting biased output, striving to use inclusive and neutral language in prompts, review output for any unintended bias or inappropriate content. Today, we will be going to demonstrate do the demonstration for these use cases. Use case 1 is drafting email.
drafting engagement letter, drafting summary, and drafting notices, replies to the notices. So why drafting email is important? So I will quickly move to the demonstration part. So let me start from the beginning. What you need to do is, sorry. So firstly, you need to search ChatGPT, and then this is the link which can take you to the ChatGPT. This is the home page what ChatGPT looks like. We need to start from the start now. As we click on the start now, initially it will ask for sign up and login. Yes, we can use ChatGPT directly from here without signing up. But what's the benefit of signing up? Whatever we are searching, it will keep it saved in our history if we are using it after signing up. So if you do not have any account on a ChatGPT, click on the sign up. And it will bring you to this page where it will ask you to create an account. You can create an account by providing your email address, or maybe use any of the account if you have on Gmail, Microsoft, or Apple. Though I already have my account, so I will quickly move to the demonstration part. So let's start with the demonstration. Here we have the ChatGPT, and starting with that, I will ask ChatGPT to write an email. As I mentioned in my presentation, that we need to be very specific what we are asking for. This is very generic. Write an email. ChatGPT doesn't know on which topic it needs to write. If I'll just give a go ahead. So it says, to help you write an email, could you provide me more details? Purpose, recipient, any specific information you want to include. Recipient कौन है, subject क्या होगा, main message क्या होगा उसके लिए. So what we can do is, I'll quickly move, and I've already readily available prompt, so I'm just copy pasting it. We are chartered accountants from ABC and Company. We want to request for the documentation for filing of ITR to our client. ITR season is already there. Write an email asking for relevant documents required for ITR filing as per Income Tax Act 1961. We need to specifically mention again according to which act we are asking for, because ChatGPT is working in across the globe. So we have specifically mentioned that we need as per Income Tax Act 1961. Also mentioning considering that the client have income from all the 5 sources, along with the deduction to be claimed as per Chapter 6A for the financial year 23-24. This is the prompt which I have prepared. And now I'll just press and enter. And here we go. So as you can see, in the blink of an eye, we have a beautifully drafted email with us in front of us. So it has considered majorly most of the items which is actually required, which we ask from the client. Let me quickly go through the email which AI has drafted. Subject, request for documents for income tax return filing for financial year 23-24. Dear, here is the client name. I hope this email finds you well. As we approach to the end of financial year, it's time to prepare your file, your return income tax, ITR as per the requirement. To ensure a smooth and accurate filing process, we kindly request you to provide the following documents and information pertaining to your income from all sources and deductions. Income from salary, Form 16, salary slip, details of any other employment benefits or perquisites received. Income from house property, rental income, property ownership, house loan interest, certificate. Income from business profession, financial statement, audit report, details of expenses claim.
capital gain detail of sale purchase of any asset, either equity, property, purchase sale deed, statement of mutual fund and stock transfer, other sources for saving account, fixed deposit, dividend income, इसलिए इसे ATC, investment proof for LIC and PPF, NHC, real assets, tuition fee receipts, health insurance. So if you go by section, it has beautifully drafted each and every line for you. After at the end, it's mentioning, please ensure that the documents are complete and accurate to avoid any discrepancies due to filing process. You can send the scan copy of the documents to our email address or arrange them to be delivered at our office at your earlier convenience. Should you have any questions or require assistance in gathering the necessary documents, please do not hesitate to contact us. Thank you for your prompt attention to this matter. We look forward to assist you with your ITR filing. Best regards. And this is this. Just imagine the kind of a mail any staff member from your office is sending to the client. जब वो client इस तरह की email पढ़ेगा, how it will look to him or her कि किस level से लोग email का drafting हो रही है. Let me show you. What we can do. This is what we do. Dear sir, please provide the documents required for filing as ITR as mentioned in attached. So most of you must have a checklist prepared for ITR filing. For example, आपके पास एक checklist already prepared है. इस prompt को मुझे किस तरह से modify करना है? Via chartered accountant firm, write an email to client providing documents for ITR filing as mentioned in the attached file. हमारी checklist थी हमारे पास, हम सारी चीजें मेल बॉडी पे नहीं लिख रहे बट चेकलिस्ट भेज रहे हैं. Just press and enter and here we go. And here we are. जैसे ही हमने उसको अटैच्ड फाइल बोला कि सारी लिस्ट हमारी अटैच्ड फाइल में लगी हुई है, उसने मिल गया द अटैचमेंट. We request you to provide the document list in the attached file. The attachment details the necessary documents and information required to report income from all source of income. Summary बता दी उसने. उसके बाद जाके उसने सारी चीजें अपने आप लिखनी. जैसे ही उसने ये लाइन लिखी, arrange for them to be delivered at our office at your earliest convenience. I want to bring your notice that in the signatures part as well, उसने यहाँ mention किया है कि your email address and your office address. So see, अगर वो ऊपर ये बोलता है कि हमारे ऑफिस एड्रेस पे डाल दो, the AI is making sure कि वो सिग्नेचर में आपके ऑफिस का एड्रेस दे दे. कभी कभी हम ये बोल देते हैं ऑफिस एड्रेस पे दे दो, बट वी डिडंट मेंशन द ऑफिस एड्रेस. So see the kind of a mail it AI generating and the kind of a mail we were drafting before using the AI. Let's quickly move to the use case 2. So I am just going to the new chat. Reason being, जब भी आप AI यूज करते हो, ये AI एक अपना चैट थ्रेड क्रिएट करता है. अब जब भी मैं ऐसे कुछ पूछूंगा तो उसको लगेगा मैं उससे ITR रिलेटेड कुछ भी चीजें पूछ रहा हूँ. इवन इफ मुझे उसमें कुछ और भी पूछना होगा तो थ्रेड ITR की ही बनाएगा. सो इसलिए मैं इसको न्यू चैट पे लेके जाता हूँ. Use case 2, drafting of engagement letter. Again, we are a chartered accountant firm, ABC and Company. We were appointed as a internal auditor of company XYZ Private Limited as per Companies Act 2013 for financial year 24-25. Write an engagement letter. हम सभी लोगों को हमेशा से ये चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसा पर्सन हो जो कि हमारी चीजें बहुत इजी कर दे, हमारे लिए चीजें इजीली ड्राफ्टेड हमारे पास आए, हमें उसमें अपना प्रोफेशनल टच देना हो, फाइन ट्यून करना हो. उसके लिए भी ऑलवेज फील कि हमारे ऑफिस में कोई हमें, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे कोलीग्स ऐसा कुछ प्रेजेंट करके दें.
नाउ व्हेन वी हैव AI, आप अपने ऑफिस कलीग्स को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने इंटर्न्स को बोल सकते हैं कि इस तरह से यूज करके वो एक ब्यूटीफुली ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं. लेट मी गो थ्रू द AI has completed the drafting of engagement letter. Let me go through it. ABC and Company Chartered Accountants and detail to the Board of Directors XYZ Limited. Engagement letter for internal audit services financial year 24-25. Dear sir, we are pleased and confirm our acceptance, understanding of the terms of our engagement as internal auditors of XYZ Private Limited for the financial year 24-25. This letter outlines the nature and scope of the internal audit service we will provide. यहाँ पर आया objective and scope. यहाँ पे उन्होंने objective बताया. The objective of our internal audit is to provide an independent objective assurance and consulting activity designed to add value and improve the company operation. Our audit will help company to accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve effectiveness of the risk management, control and governance process. मैंने इन 3 वर्ड पे बहुत एम्फेसिस दिया. रीजन आपको AI बता रहा है कि हमें किस तरह की वोकेबुलरी यूज करनी है इफ वी आर ड्राफ्टिंग द एंगेजमेंट लेटर. उसने रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल, गवर्नेंस प्रोसेस खुद यूज कर लिया. स्कोप है हमारा इंटरनल ऑडिट का. एवोल्यूशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, examination of the safeguarding of assets and the application of sound business practices, evaluation of the risk management processes and procedures. Here it brings the responsibilities of the management. Management की क्या responsibilities है और auditors की क्या responsibilities है. हमारा audit approach क्या रहने वाला है, हमारा रिपोर्टिंग कैसे रहेगा. अपॉन कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट वी विल प्रोवाइड एन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आउटलाइनिंग आवर फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन, पीरियडिक अपडेट्स टू द मैनेजमेंट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट. फीस एंड पेमेंट का उसने अपने आप ही सेक्शन डाल दिया. एक्सक्लूसिव ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस, बिलिंग विल बी डन on progressive basis due within 30 days of the invoice date. Terms and termination, start date and then confirmation of the terms. यहां से हमारा साइन एंगेजमेंट लेटर गया. इसने अपना एक्नॉलेजमेंट बना के दिया. एक्नॉलेजमेंट एग्रीड ऑन बिहाफ ऑफ XYZ लिमिटेड. डेजिग्नेशन डायरेक्टर, डेट एंड साइन. प्लीज साइन एंड रिटर्न अ कॉपी ऑफ दिस एंगेजमेंट लेटर टू कंफर्म योर एक्सेप्टेंस. सी, जो भी हमारी ड्राफ्टिंग अब हो रही है और जिस लेवल से अभी हम कर रहे हैं उसका एक अपग्रेडेड वर्जन हमें AI प्रोवाइड करा. वी जस्ट नीड टू गिव द प्रॉम्प्ट करेक्टली. हम उससे क्या चाहते हैं, हमारे आउटपुट क्या रेलिवेंट है, उसे हमें करेक्टली बताना है और उसके बाद वो प्रॉपरली ड्राफ्ट करके हमारे सामने दे रहे हैं. जैसे अर्पित, आई थिंक बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का एक क्वेश्चन होगा इसके अंदर प्लीज. दैट जब आपने प्रॉम्प्ट दिया अबाउट इंटरनल ऑडिट, डिड यू मेंशन एनी स्पेसिफिक एक्ट और सेक्शन ओवर देयर कि उसके हिसाब से ये स्कोप बना है? एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अपने कंपनीज एक्ट के, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जब तक आप करेक्ट एक्ट नहीं बोलोगे तो कभी ये यूएस के हिसाब से भी बना सकता है, इफ नॉट इंडिया. करेक्ट. करेक्ट. द अदर थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू ओवर हियर इज दैट अगर अब ये जो इटरेशन इसने बनाकर दी है एआई ने, नाउ लेट्स से सम वन ऑफ अस वांट्स टू चेंज समथिंग इन इट. हमने ये पढ़ा, अब हमें इसमें कुछ फर्दर चेंज करना है, देन हाउ वी शुड गिव अ प्रॉम्प्ट फॉर दैट? चेंज करना है अगर आपको तो देयर इज अ वन थिंग व्हिच सेज रीजनरेट. ओके. अगर इफ आई से रीजनरेट, it will regenerate the whole engagement letter by changing the some language, tuning, twisting the lines, paragraphs and anything. So वो regenerate करेगा अपने हिसाब से. So जब हम प्रेजेंटेशन में बात कर रहे थे कि जब एक बार AI ने आउटपुट दे दिया, उसके अंदर जो हमें चेंजेस करने हैं वो हमें प्रोफेशनल फाइन ट्यून टच देना पड़ेगा. सो जो हमें डिलीवरेबल क्लाइंट को देना है उसके हिसाब से जाए. ये हमारे पास एक बेसिक प्रिपरेशन करके बहुत ब्यूटीफुली लैंग्वेज में ड्राफ्ट करके दे देता है. काफी लेट्स से सारे. आई वांट टू ऐड अनदर पॉइंट इनटू इट. हाँ जी सपोज प्लीज. करो इसने लिमिटेशन ऑफ स्कोप नहीं दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल ओके आई वांट टू ऐड लिमिटेशन ऑफ स्कोप इनटू इट. ठीक है, तो उसमें से मेरे को प्रॉम्प्ट देना है. एड वन पैराग्राफ ऑन लिमिटेशन ऑफ स्कोप
अब लिमिटेशन ऑफ स्कोप में आप कुछ ऐड करना चाहते हो स्पेसिफिकली, जैसे लिमिटेशन ऑफ स्कोप में हम फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट्स हम नहीं चेक करने वाले। See, I just mentioned add one paragraph on limitation of scope, fixed assets. We won't be checking fixed assets in our scope. So Bharat ji is writing in the Q&A box saying, do it again by writing, do it again in the format of Big Four firms. I doubt ChatGPT would know that. Arpita, I can't hear you. Okay, let me try with the Big Four format. सो एज यू सी, हमने जो लिमिटेशन वाला स्कोप पहले ऊपर दिया था उसने ऑटोमेटिकली उसको कंसिडर कर लिया। रीजन बिंग वो एक थ्रेड की तरह काम कर रहा है। अब हम इसे जो भी देंगे तो ऊपर के जितने भी हमने उसे प्रॉम्प्ट्स दिए हैं वो उसे एक्सेप्ट करता हुआ चला जाएगा। It says it's similar to EY's engagement letter, emphasis clarity and responsibility and compliance with professional standards. But you need to again, हमें अपना प्रोफेशनल टच टोन हमेशा देना पड़ेगा। अब इसको करना है कैसे, थोड़ा सा मैं एक एड ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा कॉपी बटन है, वी जस्ट नीड टू कॉपी, ओपन द वर्ड फाइल, डू नॉट डायरेक्टली पेस्ट इट। ये हमारा पेस्ट हो गया डायरेक्टली और ये पूरा हमारा फॉर्मेट यहाँ पर आ चुका है। अभी इसे मैं इसे here we are। सो अब हम इसको सीधा कॉपी करके अपने वर्ड फाइल में लेके आए। अब यहाँ हमें जो भी फाइन ट्यून करना है वो हमें कर। कमिंग टू माय नेक्स्ट यूज केस विच इज प्रिपरेशन ऑफ समरी। हम लोग बैठे हुए थे, एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे थे कंपनी का। हमने रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट खोला, हमें काफी कुछ डेटाबेस मिला। सो अगर आप देखेंगे 267 पेजेस का एनुअल रिपोर्ट है। हम यहाँ पहुंचे, काफी कुछ लिखा हुआ था इसमें। मुझे लगा काफी कुछ है, मुझे इसका जिस्ट चाहिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने इसे किया कॉपी, अगेन न्यू चैट, पुराना थ्रेड यूज नहीं कर रहा। ये पूरा सेक्शन जो एनुअल रिपोर्ट में था, मैंने उसको वहां से कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ लिखा समराइज इट इन लेट्स से 200 वर्ड्स।
Here we go. पूरा पैराग्राफ, पूरा पेज में जितना कुछ लिखा था उसने उसको समराइज कर दिया 200 वर्ड्स में. Reliance is committed to achieving non-net carbon geo by 2035 with significant progress being made at the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex in Jammu. Our goal is to become net carbon zero by 20 according to the development of giga factories at Dhirubhai Ambani Complex, Green Energy Giga Complex at Jamnagar is progressively rapidly. Considering the collective potential in the 5 giga factories, we are on the track. The company's 5 giga factories are set to establish a world-class green energy ecosystem. It says, considering the collective potential of 5 gigafactories, we are well on the track for establishing a world-class self-sufficient green energy ecosystem. The transition from the traditional fossil fuels to renewable energy sources is going to be a crucial milestone on our history. Mentioning making a crucial transform fossil fuels to the renewable energy. So, इतनी बड़ी एनुअल रिपोर्ट को अगर आपको पढ़ना है तो आपने उसको कॉपी किया, उसका कंटेंट उसको समराइज किया और पूरा समराइजेशन यहाँ पर आ गया. I would also like to mention here, currently I am using the free version of the ChatGPT. अभी मैं कोई पेड वर्जन यूज नहीं कर रहा हूँ. सो आप अपना जैसे ही ChatGPT पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, आप लोग इजीली इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. अब सिर्फ यहीं पे जो उसने समराइज किया है 200 वर्ड्स में, इसको मैं बोल दूंगा समराइज इट इन 100 वर्ड्स. Here we go. Reliance aims to achieve net carbon geo और पूरा पैराग्राफ उसने 100 वर्ड्स में समराइज कर दिया. सो एज यू कैन सी, चैट जीपीटी हम सब वहां यूज कर रहे हैं जहां हमें अपनी चीजें हमारे लिए अपनी इजी करनी है, बेटर करनी है और उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है. आपको कोई मेल लिखना है क्लाइंट को, सिर्फ ड्राफ्ट आप वहां से कीजिए, जो भी फाइन ट्यून करना है आप अपना मेल बॉडी में कीजिए. बट आप जस्ट सी कि जिस तरह का मेल ड्राफ्ट होकर क्लाइंट के पास जाता है, उनको कैसा लगेगा कि ऐसा मेल क्लाइंट आपके सीए की तरफ से वो मेल उनके पास आ रहा है. समराइजेशन बहुत सारा डेटा है पढ़ने के लिए, बट आपको उसका जेस्ट चाहिए, समराइज कर दिया हमने यहाँ पे. कुछ और हमने एंगेजमेंट लेटर्स लिखने हैं, ऐसे ही हम कोई भी रिपोर्ट है उसको अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट कर सकते हैं. Coming to the next use case, which is drafting replies to GST notice. For the security purpose, I have just highlighted the areas which was not required. So वो मैंने areas highlighted कर दिए हैं. उसके बाद अब मैं बोलता हूँ कि हमारे पास शोकॉज नोटिस आया जीएसटी डिपार्टमेंट से अंडर सेक्शन 73. उसमें उन्होंने ये बोला, ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस जीएसटीआर 1 वर्सेस 3B में डिफरेंस है, विच इज जीएसटीआर 1 में आपने सेल्स ज्यादा दिखाई है, जीएसटीआर 3B में कंपैरेटिवली सेल्स आपकी कम है. सो उन्होंने आपको शोकॉज नोटिस दे दिया कि आपकी सेल एक्स अमाउंट से कम थी, जिसका टैक्स आपका सीजीएसटी 10,203, एसजीएसटी 10,203 से अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आपको आपको डिपॉजिट करवाने हैं और अब आपको उस पर रिस्पॉन्स देना है. उसका प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी फॉर द सेम सेक ऑफ टाइम मैंने किया है. जो भी नाम फर्म के हैं या पर्सन के हैं वो सिर्फ फॉर द एग्जाम्पल पर्पज के लिए हैं. I, Sita, partner of Sita and Geeta Company, received a show cause notice from GST under Section 73 of GST Act 2070. Reference number मैंने उसको change कर दिया, dated 9th Jan. It says that the sales shown in GSTR1 are higher than the 3B for the financial year 18-19, for which tax implication is 1003 each for CGST and SGST. Notice receive हुआ था मैं Deputy Commissioner से. So I mentioned reply to Deputy Commissioner mentioning that few invoices have been reported twice in GSTR1 and there are no lesser sales reported in GSTR3B.
Here we go. To the Deputy Commissioner, GST Department address, city, subject, response to the show cause notice, number this, dated this. I, Sita, partner of this, hereby submitting the following response to the show cause notice dated this, issued under section 73 of the GST Act regarding discrepancy between 1 and the 3B filings of the financial year 18-19. I acknowledge the receipt of show cause notice, acknowledgement, discrepancy explained. Upon reviewing our records, it has come to our attention that certain invoices were inadvertently reported twice in our GSTR1 filings for the financial year 18-19. This results in an apparent higher sales figure being reflected in GSTR1 as compared to GSTR3B. No underreporting. We confirm that there are no instances where sales were underreported in GSTR3B for the mentioned financial year. The discrepancy primarily arises due to the aforementioned inadvertent duplication of invoice in GSTR1. Tax implication. The tax implication mentioned in the notice amounting this, each for CGST and SGST. We are prepared to rectify this discrepancy by recording our records and adjusting our tax liability accordingly. We have already initiated corrective measures to rectify the duplicate entities in GSTR1 filing and ensure compliances with the GST regulations. We will ensure such errors do not recur in future filing. We sincerely apologize for any inconvenience caused due to this error and assure you of our commitment to comply with all GST provisions. We request you to kindly consider and closure of this matter based on our explanation. Please find the attached certified. Thank you for the attention. And this is this. And if you require any other information, please do not hesitate to contact. Make sure to attach the necessary supporting documents such as revised GSTR1, 3B summaries as mentioned in part 5th. Before sending the response, adjust the details as per your specific case and ensure accuracy in information provided. So उसका एक जो basic set of the reply था वो उसने बना के दे दिया. उसने आपको बोला मेक श्योर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स बोले हैं वो आप अटैच करें बिफोर फाइलिंग द रिप्लाई. अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं डिटेल्स एज पर द स्पेसिफिक केसेस और एंश्योर एक्यूरेसी इन ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. अभी जैसे हमने उसको बोला सेक्शन 73 के अगेंस्ट में आया था. सम ऑफ अस में वांट कि हमें सेक्शन 3 का रेफरेंस देते हुए भी उसको रिप्लाई करना है. Add the content of section 73 as per CGST Act 2017 in the reply. उसने कंटेंट डाला सेक्शन 73 of the CGST Act. Section 73 pertains to the determination of tax not paid, short paid, erroneously refunded, or input tax wrongly availed or utilized for any other reason other than fraud or any willful misstatement or suppression of the fact. In our case, the discrepancy arose due to inadvertent errors in the reporting, not due to any intention to evade tax or willful misstatement. जिस सेक्शन में हमारे पास जिस रीजन से हमें नोटिस इशू किया गया था उसका रेफरेंस देते हुए हमने उसमें लास्ट में डाल दिया कि वो डिस्क्रिपेंसी एरर की वजह से हुई थी, डबल रिपोर्टिंग की वजह से हुई थी. हमारा कोई इंटेंशन नहीं था टैक्स एविजन का या फिर विलफुल मिसस्टेटमेंट. एंड अगेन बाकी चीजें सिमिलर रखते हुए उसने वो पूरा मैसेज ड्राफ्ट कर दिया. नाउ अगेन I'm not right now. I'm not going into technicalities कि अगर हमने शो कॉज नोटिस का रिप्लाई दे दिया तो उसने ऑर्डर क्यों रेज किया है और क्या किया है. अभी जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको हमारे पास ऑर्डर आया, हमने ऑर्डर का रिप्लाई किया विच इज दिस. नाउ उन्होंने एडिशनल रिक्वायरमेंट मांगी है एज पर ऑर्डर. अगेन मैं बताता हूँ, हमने शो कॉज नोटिस आया था, हमने शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में रिप्लाई ड्राफ्ट किया. उसके बाद हमारे पास ऑर्डर इशू हो गया फ्रॉम द डिपार्टमेंट.
अब अभी मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा कि ऑर्डर क्यों इशू हुआ है, क्योंकि जब हमारा शोकोज नोटिस हमें आया हमने उसका रिस्पॉन्स कर दिया। तो हमारे पास जब ऑर्डर आया, मेंशनिंग डेट रेफरेंस सेक्शन 73, जो हमने ड्राफ्ट किया हमने उसका रिप्लाई यहाँ पे दे दिया ना। ऑर्डर का रिप्लाई देने के बाद हमारे पास आया एडिशनल ऑर्डर referring all those previous references. Please refer to your application referred over. While examining your request for rectification of order, it has been found that information documents as mentioned in annexure attached are requested for processing the same. हमने रिप्लाई करते टाइम इनवॉइस की कॉपी नहीं लगाई, हमने सिर्फ एनेक्जर्स लगा के शेयर कर दिए। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उन्होंने हमसे मांगा कि आप हमें वो डॉक्यूमेंट्स दो जो कि आपने एनेक्जर्स में मेंशन किए हैं, आप उसकी कॉपी लगाओ। नाउ दिस इज द रिप्लाई। मैंने उसे सिर्फ पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और प्रॉम्प्ट दिया। We were asked to submit a copy of invoices and the ledger of customer in the GST department. Write a letter referring to the letter attached. I'm sorry, maybe due to okay. So due to number of limits which I have exhausted, इसकी वजह से उसने वो उसको नहीं लिया। अगर मैंने से उसका पिक्चर क्लिक किया और उसे डाल के उसमें मैंने सिर्फ ये डाला कि वी वर आस्क्ड टू सबमिट अ कॉपी ऑफ इनवॉइसेस एंड द लेजर। लेट मी शो यू। We were asked to submit a copy of the invoices, ledger of the customer and the GL, write a draft letter. So उसने पूरा ड्राफ्ट कर दिया था लेटर बेस्ड ऑन द जस्ट पिक्चर ओनली। उसने पिक्चर को खुद रीड किया, उसमें से रेफरेंसेस नंबर खुद निकाले, डेट खुद निकाली, किस फर्म से पर्टेन करता है वो खुद निकाला, किस पीरियड से पर्टेन करता है, उसमें क्या हमने हमने पिछले रिप्लाईज क्या दिए हुए हैं उसको कंसिडर करके उसने एक पूरा लेटर क्रिएट कर दिया। सो दिस इज द रिस्पॉन्स विच जनरेटेड। अभी जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ लिमिट्स एक्सपायर्ड हो गई हैं शायद, इसलिए उसने क्रिएट नहीं किया नंबर ऑफ इमेजेस का। सो अगर हम अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग की, इस तरह से ड्राफ्टिंग करते हुए जो हमारे लिए चीजें इतना इजी कर दिया है, मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट दिया, उसमें सिर्फ और सिर्फ विद इन 10 to 20 seconds पूरा रिप्लाई रेडी था विद ऑल दी नेसेसरी डिटेल्स अवेलेबल इन दैट। This is it from my demonstration part. So I would like, if do you have any questions, please feel free to ask. Arpit Parulji is asking which version of ChatGPT is being used. It's a normal chat GPT. I think it's a GPT-4 only. This is अर्पित the जी free version only, correct? हाँ जी सर। ये क्या हमारी वॉइस कमांड भी एक्सेप्ट करता है? सर अभी तक ये वॉइस कमांड वाला नहीं आया है। सो जो पिक्चर और ये एक्सेल शीट वाला एक्सेल वाला भी है वो भी अभी बीटा वर्जन था। सो अगर आपने देखा डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे उसने मेरे को मना कर दिया लेने के लिए, क्योंकि आई थिंक आज की वो मेरी लिमिट एग्जॉस्ट कर चुकी थी। बीटा वर्जन्स में वो एक पर्टिकुलर लिमिट देता है उसको करने के लिए, जहां अगर मैं भी इसको अटैच भी करूंगा तो ये मेरी फाइल में अटैचमेंट्स ले लेता है।
अभी वॉइस रिकॉर्डेशन वाला भी इसमें नहीं आया आपसे, मे बी डाउन द लाइन कुछ हो आए हमारे पास। ओके, थैंक यू। प्रीवियस क्वेश्चन जेट जीपीटी 3.5 है, which says कि which does not accept the attachment. We need to try in GPT 4o, that is beta version, जो कि मेरी लिमिट रीसेट होगी आफ्टर 7 8। Okay. Okay. There's an attendee who is asking, how did you upload this image? आप एक बारी फिर से upload image करके बता देंगे, please. श्योर। सो बेसिकली आपके पास आपके सिस्टम में इफ यू आर यूजिंग विंडोज 10 और 11, एक आप पे स्नाइपिंग टूल का ऑप्शन होता है। इफ यू सी देयर इज अ स्नाइपिंग टूल। मैंने अपने कीबोर्ड में उसको शॉर्टकट किया हुआ था, इसलिए मेरे को स्नाइपिंग टूल से नहीं जाना पड़ा। गो टू न्यू, ट्रैक किया जितना मेरे को रिक्वायर्ड था, ये अपने आप कॉपी हो जाता है। ये कॉपी हो चुका है। ये बस आई नीड टू जस्ट पेस्ट इट, कंट्रोल वी, सिंपल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। Rohitji, your hand is raised. Is your question resolved? There's another question for you, Arpit. Is Yes. ChatGPT only for drafting or can we make PPT as well? Yes, it's a very good question. Yes, we can make the PPT from the AI. So yes, we can create the content from the GPT, but PPT बनाने के लिए हमारे पास दूसरा AI है। वो दूसरे AI से आप PPT बना सकते हो। उस PPT में लिखना क्या है वो कंटेंट आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हो। Rohit sir, would you like to go ahead with your question? No, I don't think so. Okay. RPG, I have one more question, that if we have made some PPT for any presentation purpose, is there any AI which can improve our language and presentation of that PPT if we put it there? सो सर बेसिकली अगर आपको PPT जल्दी बनानी हो, उसके लिए एक है gamma.app, GAMMA.APP। लेट मी शो यू। Okay. यहाँ से आपको PPT बन जाएगी, क्रिएट न्यू, और आप अपना No, my question, we have already, because PPT is generally a tailor-made one, and I want to improve its language and its presentation. Is there an AI which can capture, or if I put my PPT there, that AI can change the content and look of the PPT? यू कैन डू इट ऑन द चैट जीपीटी ओनली। देर आर टू वेज। अगर या तो आप उसका कंटेंट को कॉपी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कोई तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ले लिया, हाँ और जी। ये मेरे पास, ये मेरी लाइन मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे इसको चेंज करना। आई जस्ट कॉपीड इट, पेस्ट, रिहैश दिस। when you input a in यहाँ पे input ऐड कर दिया, chat gpt processes, analyzes this input, analyzes it and produces it। आप जो यहाँ पे अटैचमेंट देख रहे हो, यहाँ पे जब आप GPT 4 वर्जन आपके पास होगा, आप यहाँ से अपलोड करके भी कर सकते हो, लेकिन आपको कंटेंट कॉपी पेस्ट करके रिहैश करना है, वो आप उसको रिहैश करके एक बेटर इंग्लिश वर्जन आप उसका निकाल सकते Is it not possible that that be changed on the same PPT which I submit to them, instead of copying, pasting, and then again repasting it on my original PPT? हो। ओके सर, देयर इज अ वन AI टूल Copilot which is which is sponsored by the Microsoft only। Copilot का वर्जन आप अगर MS Office के अंदर इंटीग्रेट कर देते हो, Copilot will do for you। Okay, thank you, thank you. वेलकम सर।
I think there's another question for you, Arpit. Is Yes. there a paid version as well or free version works fully for all purposes? Anuj is asking. सो यस, फ्री वर्जन से काफी सारी लिमिटेशंस हैं, और पेड वर्जन आपको सब अलाउ करता है। जैसे अभी डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे जस्ट बिकॉज वो फ्री वर्जन था तो वहां पे उसने रोक दिया। अगर वो पेड वर्जन होता तो वो उस पिक्चर्स को लेके उसका कंटेंट क्रिएट कर देता। इन अ सिमिलर वे अगर आप देखोगे, मैं जैसे मैं अटैचमेंट पे जाता हूँ वो बोलता है जीपीटी 3.5 डज नॉट सपोर्ट अटैचमेंट्स, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर जीपीटी 4 लिमिट्स रीसेट्स आफ्टर 7-8 PM। तो अगर ये मेरा पेड वर्जन जीपीटी 4 ओ चल रहा होगा तो ये मेरे को लिमिट नहीं देगा, अनलिमिटेड टाइप में मैं इसको यूज कर सकता हूँ। Okay. Rajat ji is asking, can we upload PDF file in ChatGPT? यस, अगेन इन पेड वर्जन। Arun ji is saying same prompt process is used in other ChatGPT launched by other companies. Oh, he's trying to ask, I think he's trying to ask other AIs जो ChatGPT जैसे बने हैं. So can we use the same prompt process over there as well? हाँ यस, लेकिन जो आउटपुट होगा वो थोड़ा बहुत उनका जो वो कैब जो यूज करी होगी उन्होंने या जो भी टेक्निकल टर्म्स यूज करी होंगी वो चेंज होती जाएंगी, बिकॉज एआई की सर्वर पे चल रहा है, जेमिनी गूगल के ऊपर है, को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का है। तो अकॉर्डिंगली बस थोड़ा आपका आउटपुट में चेंज हो सकता है, बट प्रॉम्प्ट चल जाएंगे। Okay. What is the name of that AI for PPT? That was Gamma.app, correct? गामा डॉट है, GAMMA.APP। Okay. Which one is best AI for presentation? Himanshu ji is asking. I think Gamma.app, correct? We have answered. Present, so basically depends कि what kind of a PPT you are using। सो मतलब एक पीपीटी के भी एक प्रकार होते हैं। अगर आपको लगता है कि एक नॉर्मल ठीक ठाक पीपीटी चल जाएगी, वो गामा डॉट ऐप आपको बना के दे देगा। बट अब अगर आपको पीपीटी बहुत सुंदर चाहिए, यू कैन गो विद कैनवा। Okay, so are you saying Canva also has an AI now? यस, Okay. Sharaji is asking, as GPT contains data up to September 21 only, so is it feasible for use it for a knowledge purpose or it is only feasible for drafting any reply or letter? सो बेसिकली अभी जो हमने जैसे हमने सेक्शन 73 ऑफ जीएसटी डाला उसने कैप्चर कर लिया क्योंकि वो 21 से पहले का। अगर जब चैट जीपीटी लॉन्च होता तब सितंबर 21 तक का डेटा था। अगर हम जैसे गूगल जेमिनाई में जाते हैं, गूगल जेमिनाई इज अपडेटेड एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। तो सिमिलर वे में चैट जीपीटी भी विद द टाइम वो अपडेट हो रहा है। जो अभी मैंने आपको पिक्चर वाला वर्जन दिखाया वो पहले नहीं था उसके अंदर, एक्सक्यूज मी। विद द टाइम दे आर अपडेटिंग इट, मे बी गोइंग फॉरवर्ड वो जो डेटा अभी 21 तक अपडेटेड है वो आगे भी अपडेट होता जाएगा। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट आप गूगल जेमिनाई यूज कर सकते हो फॉर द नॉलेज पर्पज, वो आपको रियल टाइम रिजल्ट्स दिखा सकता है। Google Gemini, you said? यस, Latest data. Okay. Can we upload number of invoices and will it summarize them to an Excel sheet? Shashank ji is asking. कम अगेन। Can we upload a number of invoices and will it summarize them into an Excel sheet? ओके, सो यू वांट कि अगर को उसको समराइज कर दें और फिर उसको एक्सेल शीट के अंदर वो सारा डिटेल्स को पुल कर देगा क्या? हाँ, मतलब कि 10 इनवॉइस मैंने एक साथ एआई में चढ़ाए और फिर उसके बाद वो एक्सेल शीट बनाकर दे दे एज पर द फील्ड्स दैट आई वांट। पॉसिबिलिटी है, कर सकता है, बट मैंने खुद अभी ट्राई नहीं किया, बट हो सकता है ये। Would you maybe like to take up something? Do you have any data with you, Arpit, जो कि आप इसमें अपलोड कर सकते हो to make an Excel? अगेन Can we मेरा take अभी up वो this iteration अभी live? नॉट अलाउइंग मी टू अपलोड एनीथिंग राइट नाउ। मैं सिर्फ अभी इसके अच्छा साथ सिर्फ टेक्स्ट में काम कर सकता हूँ। अच्छा, ओके ओके, अरे हाँ, वो आपका वो अपलोड वाला ऑप्शन डिसला हो गया है। Okay, Shashank, I think we will have to get back to you about this after trying it. And you can also try it by yourself and we can, of course, brainstorm it together. Moving on. Anuji is asking, can you please give some more AI tools which professionally we can use? Anuji, we are going to come up to that in another 2-3 minutes. Anuji is asking, like we use VLOOKUP, HLOOKUP, or pivot tables. Anuji, your question is unclear. Could you please go retype it? Bharatji is saying, I think we cannot upload attachments in ChatGPT instead of pasting content.
अगेन वही मैं कह रहा हूँ, जो आप वर्जन यूज कर रहे हैं वो शायद फ्री वर्जन होगा, फ्री वर्जन में हम नहीं कर सकते। वर्जन मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मैंने इसी कोई मैं इनकॉग्निटो में खोलता हूँ और मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ, वो मुझे अटैचमेंट का साइन भी नहीं देगा। Okay. आई वॉज यूजिंग माई फ्रॉम माई ओन अकाउंट, यहाँ अटैचमेंट का साइन आ रहा है। Okay. Rajesh ji is asking from where will we get the required AI tools? बेस्ट वे गूगल। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपको एआई टूल चाहिए, किस लिए चाहिए। Arpit, two of the participants are asking for your phone number. If you are comfortable sharing it, you can share your phone number or your email, whatever you are comfortable with. So here's my contact details. Tapas ji is asking what is the cost of paid version of ChatGPT? It is $20 per month. Gaurav ji is asking, is there any course of ChatGPT where we can learn the intricacies of it? Yes, it is available. Could you give any reference, please? There are multiple, tutors available, paid as well. There are few free versions available in the YouTube, but paid में काफी सारे हैं. So maybe there is one is B10X, one is Jatan Shah. So you can try anyone. Okay. Vartika ji is asking, since you are using ChatGPT for a very long time, so what is the biggest challenge you have faced? सो बिगेस्ट चैलेंज ये होता है कि आपके पास वो रिपीटेड डेटा देता रहता है। अगर आप किसी एक चीज को, अगर लेट सपोज आपने कोई एक नोटिस के लिए आपने उसे सर्च किया, आप 10 दिन बाद भी यूज करोगे, वो सिमिलर काइंड ऑफ टोन पे ही रिप्लाई करता है। अगर आप उसमें कुछ चीजें चेंज करना चाहो तो वो लगता है कि आप कुछ फ्रेश वर्जन देगा, वो बहुत ज्यादा फ्रेश वर्जन नहीं देता। Okay. Yeah. There's an attendee who's asking. Arpit, can I add to your this thing for the benefit of everybody? Actually, Please, sir. I'm using a lot. What I do that just to get rid of this particular repeated thing. What I do, I get generated my information from ChatGPT, then I copy and paste it to the Gemini. And from Gemini, and then I've been able to get some refreshed information from another AI tool. It can be done with other tools also. One thing. Another thing I would like to tell you that we people are too busy many a times, and we use voice command to prepare our replies and other things. There are many AI tools available which can convert your voice command into MS Word or maybe similar sort of things there, which you can then copy and paste to ChatGPT or Gemini for your final reply. Correct. I just want to add one more line in that. The content I receive from the Gemini I personally feel is better as compared to GPT. Yes, I also feel. Gemini is giving better content because it's updated now, and its language is also many a times better than Chat GPT language. Yes. I endorse your view. I endorse your view. I think, sir, next time we should do Gemini then. But luckily, I tell you one thing. My son told me this thing that Gemini is better than Chat GPT. Papa, आप इसको use किया करो. That's nice. That's really nice. So one attendee is also asking, Arpit, can GPT perform some calculations as well, like converting my raw sales data to ready GSTR1 data? If yes, how to do that? So far, people have been using Excel for this, right? यस, लेकिन अब उसके लिए कुछ इंटीग्रेशन आपको करने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, सो दैट कि आप उसके आपके जो नंबर्स हैं उसको आप GSTR1 और GSTR2 वर्सेस 3B का कंपैरिजन कर पाओ। So, आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देके नहीं होगा, उसके अंदर जो आपके कुछ मैक्रोज आते हैं, VBAs आते हैं, वो इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे एक्सेल में, देन आप उसको कर सकते हो। मतलब उसके लिए एक पूरा अलग सेमिनार लगेगा उसको बताने के लिए। Okay, but this means that ChatGPT in itself alone cannot solve this for us, कि वो calculations करे. कैलकुलेशंस कर सकता है, डिपेंड आपको कैसी कैलकुलेशंस चाहिए। अगर आज मुझे कैश फ्लो बनाना है, मेरे लिए ChatGPT कैश फ्लो बना देता है, वो भी कैलकुलेशन है। अब आप कहो कि मुझे 2B वर्सेस 3B को रिकंसाइल करना है, उसके लिए फिर आपको एक पहले VBA क्रिएट करना पड़ेगा, मैक्रोज बनाने पड़ेंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्सेल में, फिर उसके बाद वो रिजल्ट आपको देगा। Got it.
Moving on, Akansha ji is asking, AI या AI क्या flyer या poster भी बना सकता है? What is a good AI for this? Canva For flyers. for flyers. Sorry, what did you Canva. say? I'm sorry. Canva for flyers. Canva only. Okay, Canva. Okay. Akansha ji, answer is Canva. Yashveer ji is asking whether we need genuine MS Office suite for Copilot integration or regular one will work. MS Office 365 specifically. Arun ji is asking for learning stock market through ChatGPT from basic, how we start. अगर कुछ भी नया हमने सीखना है तो ChatGPT को कैसे हमको prompt देना चाहिए? That's his question. Again, आपको किसी से भी कोई जवाब चाहिए होता है तो आपका सवाल ठीक होना चाहिए. आपका सवाल ठीक है कि बस जवाब आ जाएगा. हाँ. Could we take up this iteration, Arpit? Can we make one question for Arun ji for stock market basic learning? अब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं. Just very simple. What is Sensex and Nifty? मैं बिल्कुल नया हूं फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में. मुझे कुछ नहीं पता. सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी 2 नाम सुने. मुझे सिर्फ ये बता दो. मुझे सेंसेक्स पता लगा, सेंसिटिव इंडेक्स, जो कि 30 लार्ज वेल एस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियली कंपनीज की बात करता है, जो बीएसई पर है. एनएसई पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो 50 कंपनीज की बात करता है. बहुत सेंसेक्स और इंडेक्स इंडिकेटर्स ओवरऑल परफॉर्म इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है. सेंसेक्स और निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट का था, इसलिए उसने अपने आप इंडिया उठा लिया. अभी हम जैसे डाउ जोन डालूंगा वो अपने आप यूएस उठा के ले आएगा. सो आपको उनसे क्या आउटपुट चाहिए, आपको वही क्वेश्चन उससे पूछना है. Moving on, Shivam ji is asking, can GPT perform some? We have already done this. Okay. Suraj ji, can we summarize YouTube video or any other video here? Yes, from not exactly from the GPT. आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा. There is a one extension called Merlin. MERLIN. There is one extension. आपको वो Google Chrome में वो extension input करना पड़ेगा. MERLIN. It will summarize your YouTube videos in that. किस किस टाइम फ्रेम में वो क्या चीजें बता रहा है वो आपको एक्सप्लेन कर देगा. Is it something like subtitles for us basically? Basically summarized, not the subtitle but summarized. Even if वो हाँ. दूसरी लैंग्वेज में भी है तो आपको इंग्लिश वर्जन में कन्वर्ट करके बता देगा क्या है. Okay. Again, Okay. it comes at a risk. Merlin will read each and everything whatever is going on in your system, क्योंकि वो एक्सटेंशन की तरह काम कर रहा है, वो सब कुछ पढ़. These tools have their drawbacks also. Anyway, Himanshu ji is asking, can we make financial balance sheet presentation like listed company from ChatGPT or some else AI? Yes, we can present. अगर हमें बताना है कि हमें कारों की रिपोर्ट चाहिए या हमें अपने significant accounting policies now become material accounting policies, तो हमें उसे material accounting policies अगर हमें अपनी डालनी है तो वो ड्राफ्ट करके दे देगा. बट हमें उसको बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं. रेवेन्यू हमारा, अगर हम डेप्रिसिएशन ले रहे हैं तो एसएलएम ले रहे हैं, डब्ल्यूडीवी ले रहे हैं, यूजफुल लाइफ हमें बतानी पड़ेगी. हमें कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास हैं, किस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली हमें यूजफुल लाइफ बतानी पड़ेगी. तो बेसिकली हमें क्या चाहिए हमें उसको सब बताना पड़ेगा. अगेन वो हमें वो ड्राफ्ट करके दे देगा. Do you have some information ready with you, Arpit, where we can take up this iteration for Himanshu ji for any kind of financial statement or some part of financial statement? नॉट एग्जैक्टली, बट मेरे पास कैश फ्लो रिलेटेड है. कैश फ्लो हाँ, can we do that? Can we do that? या श्योर. एक छोटा सा. Himanshu ji, your question for AI for due date reminder to client as flyer or poster sending is not what comes under the purview of ChatGPT. पर flyer और poster के लिए Arpit has already updated you for Canva. आप ईमेल भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. अगेन आपको उसके लिए वीबीए बनाना पड़ेगा. आपके पास ऑटो ईमेल जाएगी क्लाइंट के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जस्ट ऑन अ सिंगल क्लिक. prepare a cash flow statement as per AS3 on the basis of given information.
अगेन हमारा चैट जीपीटी काफी बार गलत रिस्पॉन्सेज देता है, इसीलिए हमने जो बोला था प्रोफेशनल ट्यून टच देने की जरूरत है, वो इसीलिए हम कैश फ्लो में घंटों बता देते हैं। और ये रहा हमारा कैश फ्लो। सो उसने सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया, रेवेन्यूज, उसके बाद जो इनका वाया प्रॉफिट लेके इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट, इन्वेंट्री, करंट लायबिलिटीज, मूविंग टू इन्वेस्टिंग में प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कितना रहा, प्रॉपर्टी प्लांट में इक्विपमेंट में मूवमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या मूवमेंट रहा है, उसके बाद वो उसने बता दिया। अगेन हमेशा ये करेक्ट रिजल्ट्स नहीं देता, कुछ चीजें इससे मिस हो जाती हैं। वी जस्ट नीड टू मेक श्योर जो उसने रिजल्ट्स दिए हैं वो ठीक हो। Moving on, cost of paid Gemini. आई थिंक $20 per month. How did you prepare this PPT? Like Gamma and I don't know which PPT are they talking? Is this person talking about? About the PPT. If yes, this is again from Canva. Okay, Vipulji is asking, can we rely on judgments and case laws taken by ChatGPT to be used in appeal drafts? So we can refer, but for the reference purpose only, we need to cross-check it with our clauses, sections, and those everything available with us. We cannot directly rely on that. And I of think- course, sir, I have something to add as well. If you do rely on any judgments that are coming over there, we would have to go back and look for the citation, the exact citation of the judgment, and make sure that it is actually a judgment and it is not making it up. Correct. That was one of the challenge we discussed in the during the presentation, over reliance on the AI. Hitesh is asking, sir, if we do not know how to write a prompt in ChatGPT, how can we learn about writing the prompt? So the entire webinar was about this. However, if there are some basic tips, if you can give Arpit, like there are some pointers that we have to make sure. For example, one pointer I noticed that act का नाम लिखना जरूरी है. So if you can give some pointers for our participants to remember while giving a prompt. So basically, जैसे ही आपने कोई prompt दिया, आपको आपके दिमाग में सिर्फ ये आया कि मुझे सिर्फ एक ईमेल लिखना है, उसने एक ईमेल लिख दिया, जो हमने बात करी थी, ड्राफ्ट एंड ईमेल टेम्पलेट। अब आपको याद है कि नहीं, मेरे को तो ईमेल जो लिखना था, मुझे तो ईमेल लिखना है क्लाइंट से मुझे ये डेटा मंगाने के लिए। सो आपने वो डेटा डालने के लिए आपने बोला राइट एन ईमेल फॉर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर आईटीआर फाइलिंग। उसने अब आईटीआर फाइलिंग के लिए लिया। आईटीआर फाइलिंग के बाद उसने अपना सब कुछ कर दिया, फिर आपको लगा कि नहीं, मेरे को भी इसके अंदर ये भी मेंशन करना है कि सभी सोर्सेस से आ जाए, इंक्लूड ऑल 5 सोर्सेज इन द ईमेल। क्योंकि कभी कभी क्लाइंट हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन लेके आता है, बट हमें आधा कुछ हमें एआईएस टीआईएस से पता लग रहा होता है इनकी ये वाली इनकम भी तो रखी हुई है। तो इसलिए हमने कह दिया कि नहीं, मेल में जाना चाहिए तो 5 सोर्सेज अवेलेबल होके जाने चाहिए, तो हमें 5 सोर्सेज के नाम आ जाएंगे, अदर सोर्सेज और व्हाटएवर। अब मैंने उसमें लिखा कि 5 सोर्सेज, उसने उसको लिखा, उसको पढ़ा 5th सोर्स, तो उसने सिर्फ यहाँ पे उसने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स उठाया। हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस, सैलरी, इनकम, अदर सोर्सेज, अब इसने सबको कंसिडर कर लिया। सो प्रॉम्प्ट आपके पास, आपको जो भी देने वो सब हिट एंड ट्राई से आएंगे। आपको वो रेलेवेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपको सिर्फ अपने प्रॉम्प्ट चेंज करने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली। इसका कोई बेसिक थंब रूल नहीं है। आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेरी। Yes. Moving on. Anuj is asking, we discussed preparing for audit and drafting. Does ChatGPT help in actual auditing?
For example, if we give access to books and it points out errors. यस, बुक्स आप उनको कैसे दोगे, जैसे मैंने आपको बताया को पायलट था, को पायलट के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो उसको वर्ड में और एक्सेल में, एंड अकॉर्डिंगली जो आपको चाहिए होता है वो आप उसको प्रॉम्प्ट दो, वो आपको मैक्सिमम कुछ टाइम पे आपको हो सकता है कि वो रिजल्ट्स ना दे, बट मैक्सिमम टाइम पे वो आपको एक्चुअल रिजल्ट्स दे सकता है. Himanshu ji is asking, I'm asking for presentation like PPT from PDF. He's asking if there's an AI tool which can read the PPT, PDF and make a presentation for him. Again, paid version of Gamma. Sanyam ji is asking, every AI tool has its pros and cons. I usually go for Copilot. So does ChatGPT outperforms Copilot? Basically, can you summarize which AI to use for which task? If you'll go to the Copilot is integrated with the ChatGPT only. If I'll take you to the Copilot Microsoft, somewhere it says कहीं तो वो बोलता है कि जहां वो कह रहा है कि इंटीग्रेटेड विद दिस ओनली चैट जीपीटी. सो कोपायलट का जो वर्जन है जो भी वो एक्सेस कर रहा है वो चैट जीपीटी 4 डेले TALLE उससे ही कंसिडर करके ले रहा है. Okay. Gurpreet ji is asking a question about your cash flow, Arpit. Did you take the balance sheet for 2 years for making cash flow? He's asking. Yes, for 2 years a movement in the balance sheet. Okay. So you will Okay. see मेरे पे readily available था. So 23-24 जो changes थे, accordingly I converted this into the prompt. Reserve and surplus increased by this and long-term borrowings decreased by that amount at least. We have shared all the links of our social media platforms on in the chat box, and you can always stay connected with us through those channels. So Arpit, if you could just quickly sum up the various AI tools that you have been using in your practice, which our members can use and can be of use for them in practice. So AI tools is basically depend upon your requirement. So we are using ChatGPT, we are using Gemini, we are using Copilot, we are using Canva AI, we are using PDF AI integrated in that. Again, we are using Gamma app for preparation of presentations. So it all depends ki what kind of a requirement you have. There is one Udly we are using. So Udly, let me just quickly explain what is Udly. If you want to give any kind of a presentation, यूडली पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो. वो आपको बताएगा कि कहाँ आप एरर कर रहे हो, कितनी बार आपकी जो आंखें थी कैमरा से मूव करी थी, कितने बार आपने पॉजेस लिए थे. सो इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर प्रेजेंटेशन. That's nice. Thank you, Arpit. I'll quickly ask Sanjay sir, he has joined us, uh, to give a vote of thanks to you and all the participants. Thank you, CA Neha. Though I have not gone through the entire deliberation, but last 5-10 minutes, the CRP Taneja, what deliberation he has done. Certainly, it is an eye opener for a person like me who's deep into litigation. And what I suggest to all those seniors, those who are trying to learn about this, they should, though they should try to learn it, but at the same time, they should use the younger generation as their co-partner, like co-pilot. They should, at this stage, only use their experience, and the younger generation should give them support. So always this is the message to everyone. And since this is the first endeavor which the Voice of CA has done so far as AI side is concerned, normally we are known for income tax, GST,
and some IFRS program, etc. But this use of AI in all spheres of the practice, including the audit, taxation, everything. I think since it is being recorded in my YouTube channel, we'll also circulate it. And Arpit, I'm sure about it that after this being circulated to all our subscribers, which are more than 75,000, your email box will be full of invitation from various other program organizer, because in our program, lot of other organizers are also seen, because it is not a restrictive, you can say, forum for anyone. But Neha, it's a beautiful idea which is generated by you. I congratulate you and each and every participant, those who have attended this. Thank you very much for joining the Voice of CA's programs in large number. And the YouTube reports we will submit to you, Arpit. Thanks for giving your time and insight for everything. And we would like to have advanced version also. So for that, Neha will connect with you. Thank you very much. Thanks a lot. Absolutely. It was my pleasure, Absolutely. sir. And thank you for providing me this opportunity. Thanks a lot. In fact, Sanjay Always, sir, it was originally A.K. Srivastava sir's idea, saying कि AI पे कर दे यार Neha. It is very important for people like us who are in our elder years. We want to. Yeah, it's just giving me some idea about how things have moved, and how do we, as Sanjay said, we need to go along with the younger generation in this. Maybe they are the leads in this, and we could use our wits a bit. That okay, somewhere we can probably have a role at the final stage. That okay, not just to do in a particular manner. As But then Srivastava ji, we always call you as the Director General of our Voice of CA Search and Sequence program. So once again, Director General, I invite through this forum a partner who wanted to be a partner in my firm for AI configuration. So AI should also do this thing that if I write, I need a partner, they should give me the details of the partners, those who are interested in AI also. Thank you very much. Always with you, Sanjay. You know it for last maybe at least 30 years. Yes, thank you. Arpit, just Okay, last Neha, question. we can close. Just last question. Manoj is asking, do you have a YouTube channel? No, I don't have YouTube channel. So sorry, Manoj sir. He's only available on our channel. Anyway, okay. We'll pack this up. Thank you, Arpit. Thank you, Sajid sir. Thank you, AK sir, for joining us today, Thank along you. with all the Thank you, participants. Neha. It was a nice session. Hope to see you all in the next session on 24th. We are doing 2 industries, specific litigations issues, burning litigation issues in GST for 2 industries, export and intermediaries. Hope to see you in the next lecture. Okay. We'll close this. Anything on income tax you're doing? Last line. Sir, of course, in the next month, of course. Anything on the income tax that will be of more interest to me, and at least to Sanjay also. Sure, sir. We'll yeah, I fully agree with this. AI won't replace the person, but the person using AI will. Just the closing remark I want to mention that AI won't be replacing us, but the person using AI will replace us. So we have to start using AI as soon as possible. What I heard sometime back was that a reply drafted through AI presented in a court, and it was like totally went against them. I was looking at whatever language they were using, the case law they were using. Srivastava ji, everything is to be fine-tuned. It is to be fine-tuned. It is to be looked in again. Srivastava ji, things start to be fine-tuned, not to be adopted like this. Yeah. And reviewed. You see, whatever is coming, it has to be reviewed reviewed by the senior. Absolutely. Do we have the permission to close the session now? Yeah. Okay then. All right. Okay. Thank you all. Thank Please you, close the session. Thank you. Okay, sure. Thank you, everyone.